नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस रो सीएचएसई चैनल को समस्त को वेलकम। तो आजिकार सेशन रे जेमिति कि तमे माने थंबनेल जानि पारिथिबो आमे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जोटा रो कि हमर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमर बोर्ड एग्जाम रे आसी पारे सेही सब क्वेश्चंस ऊपर आज हम डिस्कशन करबा कोन कोन प्रोबेबल क्वेश्चन आसुची कोन कोन प्रोबेबल एमसीक्यूज माने रहइबो सेउडा को मध्ये हम देखिबा आज रो क्लास रे ठीक अछि। आज रो क्लास सरिला पारे तमरो 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन आउ जेतिकी प्रकार एमसीक्यू प्रोबेबल एमसीक्यूज हमर आसीबार थिबो से सब जिंस आजिरो क्लास हैला पारे आजिरो क्लास भितरे आई गेस आई एंड आई होप तम मानकर सेटा क्लियर हे जिवो ठीक अछि। तो आजिरो क्लास रे हम ना कि खाली क्वेश्चन डिस्कशन करबा किंतु ता संगे तार आंसर्स गुडा को मध्ये डिस्कशन करबा 2 मार्क क्वेश्चंस और 3 मार्क क्वेश्चंस रे सब आंसर गुडा को मध्ये हमर ई स्लाइड रे दिया जायछि। वंस हमर क्लास ता सरिला क्लास सरिला पारे मु तम मानकु व्हाट्सएप ग्रुप रे ए फाइल टा को मध्ये शेयर कर देबी जा द्वारा कि तमर फ्यूचर रेफरेंस पाइन बोली सेटा हेल्पफुल हबो निहाती ठीक अछि। ताऊ देरी करबानी क्लास स्टार्ट करबा ठीक अछि। क्लास स्टार्ट करबा तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन हैला व्हाट इज कैपेसिटेशन एडा डायरेक्टली तम पाखरे थुआ हे परिबो एडा डायरेक्ट क्वेश्चन सर हैला। Capacitation is the series of physiological changes that the sperm undergo in the female reproductive tract, enabling them to fertilize with the ovum. हैला तो capacitation हमर कोडी होची capacitation होची हमर sperm रे कोडी होची माने लोकेशन कोडी लोकेशन होची female reproductive tract कौन होची एक्चुअली sperm रे किछि ना किछि चेंजेस होची हैला। स्पर्म रे किछि ना किछि चेंजेस होची फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहि परिबो तमे फिजिकल चेंजेस कहि परिबो तमे केमिकल चेंजेस कहि परिबो तमे एक्चुअली टेक्निकली देखिबा को गले कोन होई ना स्पर्म ऊपर गोटे कोलेस्ट्रॉल लेयर टे लागि थाई जोटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को एंटर करिला पारे सेटा डिसॉल्व हो जाय सेटा डिसॉल्व हेबा जगु तार मोटिलिटी टा अधिक देखेबा आउ ता संगे ओवम सहित फर्टिलाइज करियार एबिलिटी मते तार बढ़ी छी ठीक अछि। तो एटा होची हमर कोन ना कैपेसिटेशन रो माने ठीक। तो एडी कैपेसिटेशन रे तमे कोन आंसर लिखि परिबो ना capacitation is the series of physiological changes that the sperm undergo in the female reproductive tract enabling them to fertilize with the ovum हैला। तो एडी कैपेसिटेशन प्रोसेस द्वारा sperm fertilizing capacity and motility is increased हैला। तो जदी 3 मार्क क्वेश्चन आसे तो एडा सहित तमे ए पॉइंट को मते सेडी ऐड करि परिबो आ एटा को तमे 3 मार्क क्वेश्चन मते बनेगी आराम से लिखि परिबो आंसर ता ठीक। नेक्स्ट नेम द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड मेंशन देयर सोर्स देटा हार्मोन जोटा कि हमर ओव्यूलेशन टाइम बोली रिस्पांसिबल सेटा कोको हार्मोन देटा एलएच और एफएसएच बस एलएच और एफएसएच तार सोर्स कोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जदी हमें एटा सहित जदी ए जो क्वेश्चन ना मानकर 3 मार्क क्वेश्चन रे आसी गला पहिले कोन करबा हैला 3 मार्क क्वेश्चन रे आसी गला हमें कोन करि परिबा एमिति लिखिबो हाइपोथैलेमस माने एतिकी तो लिखिबो ता संगे ए जो फ्लो चार्ट ता बने दबो हैला। हाइपोथैलेमस रो जीएनआरएच रिलीज होची सी जाईगिरी एक्ट करची का ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी ऊपर एक्ट करची एंटीरियर पिट्यूटरी रो पुनी एलएच आउ एफएसएच LH और FSH है ना। अब LH और FSH पुनी जागी एक्ट करचोनी हमर कहा ऊपर ओवेरियन हार्मोन्स ऊपर ओवेरियन हार्मोन्स रो पुनी हमर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज ठीक अछि। तो ये हे गेला हमर कोन ये हे गेला हमर फ्लो चार्ट जोटा पूरे की तमे एडा को ए क्वेश्चन टा को ही 3 मार्क बनै करी लिखि पाइबो ठीक अछि 3 मार्क बनै लिखि पाइबो। हां बॉटनी रो क्वेश्चन सर आनिमा ठीक अछि सर को जानै दे हैला। नेक्स्ट देखो तापरे व्हाट इज द एक्रोसोम स्टेट इट्स फंक्शन द एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द स्पर्म हेड containing hydrolytic enzyme that help the sperm penetrate the egg covering through the during the fertilization। एक्रोसोम होची हमर स्पर्म रा हेड ऊपर थिबा गोटे हमर स्ट्रक्चर ता जोटा रे की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अछि को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अछि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमर एक्रोसोम रे कोन कोन अछि वी हैव sperm lysine hyaluronic acid
हैला ए सब स्ट्रक्चर्स गुडा हमर एठी देखा जाउची कोडी एक्रोसोम रे एक्रोसोम ना कोड मॉडिफाई हिची को सेल को ऑर्गेनेली रो मॉडिफाई हिची एक्रोसोम होची कोटे प्रकार मॉडिफाइड गोल्जी apparatus modified golgi apparatus done अच्छा acrosome दा कोडी अछि ना sperm रो head region located in the sperm head रे एडा हमरो located थाए जदी एटा क्वेश्चन ना हम 3 मार्क रे आसी गला पिले ताहाले sperm रो स्ट्रक्चर टा कर देबो तार नेक देखे देबो तार मिडिल पीस देखे देबो तार टेल देखे बस ये हेगला तार न्यूक्लियस ये हेगला तार न्यूक्लियस आ ये हेगला तार एक्रोसोम ये हेगला एक्रोसोम एक्रोसोम रे ये हेगला तार न्यूक्लियस न्यूक्लियस आ एडी तार नेक रे हेगला कोन सेंट्रियोल अछि मिडिल पीस रे कोन अछि मिडिल पीस रे माइटोकॉन्ड्रिया अछि आ टेल रीजन रे हमर फ्लैजेला ठीक अछि तो ये हेगला हमर हेड ये हेगला हमर मिडिल पीस आ ये हेगला हमर कोन ना टेल हैला एडा हेगला गोटे कंप्लीट हमर कहार स्ट्रक्चर दिस इज द फिगर ऑफ द sperm हैला then next what is the corpus luteum mention the function corpus luteum is the remnant of the ruptured graphene follicle after the ovulation it secretes progesterone to maintain the uterine endometrium आउ जदी ए क्वेश्चन एडा को तमे एज द कॉमन हमर 2 मार्क क्वेश्चन रे तमे एडा को लिखि परिबो ठीक अछि एई क्वेश्चन ना ही जदी हम 3 मार्क के आसी गला ताहाले आउ कोन पॉइंट ऐड करबो ना corpus luteum acts as the temporary endocrine gland which secretes progesterone to maintain the pregnancy by thickening of endometrium को मोटा करे कि corpus luteum हमर कोन करूची corpus luteum सेडा को सब हमर मेंटेन करके रखि पाउछ हैला नेक्स्ट अब corpus luteum रे केमिति फॉर्म होची कि remaining of the graphene follicle ता कोन ए गोटे मैच्योर follicle ता जोडो के हमर ओव्यूलेशन होची ओवम रिलीज हे कि बाहर होची हैला नेक्स्ट आस differentiate between spermatogenesis and oogenesis दीटा एग्जांपल कोन spermatogenesis testis रे होची oogenesis ovary रे होची हैला आउ कोन होची spermatogenesis रे आउ कोन एक एग्जांपल लिखि परिबो ना गोटे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रु चारटा स्पर्मेटोजोआ बाहर होची किंतु गोटे प्राइमरी ओसाइट रु केवल गोटे ओवम बाहर होची हैला आउ गोटे जदी एडा मानकर जदी 3 मार्क रे क्वेश्चन पळि आसीला तो आउ गोटे डिफरेंस रे कोन लिखि परिबो कि spermatogenesis starts from puberty and lasts till lifetime जाय चलथिबो किंतु puberty रो स्टार्ट हो oogenesis कथा जदी कहबा it starts from कोड स्टार्ट होची birth until birth पूर्वरु हैला starts from the fetal or the embryonic stage ठीक अछि एरा आउ गोटे पॉइंट हे जिवो हमर आउ गोटे पॉइंट हे जिवो चलो तो spermatogenesis occurs in the testis oogenesis occurs in the ovaries one primary spermatocyte form 4 functional sperms whereas one primary oocyte form one ovum and 3 polar bodies ठीक अछि दीटा एग्जांपल दीटा डिफरेंस एठी हे गना आउ गोटे डिफरेंस एठी लिख देली हला 3 मार्क क्वेश्चन रे मते तुम एटा आराम से अटेंड कर परिबो नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द Sertoli cell रे फंक्शन कोन सिंपल एटा 1 मार्क क्वेश्चन रे मते तुम लिखि परिबो हला 1 मार्क क्वेश्चन रे कोन लिखिबो Sertoli cell nourish the developing sperm cell and regulate the spermatogenesis हैला आउ कोन लिखि परिबो एटा रे ना Sertoli cell are also known as nurse cells या फिर
versus tentacular cells हैला और Sertoli cells गुड़ा केमिति थाए these are long and elongated cells long आउ elongated cells थाए ठीक अछि लंबा 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 हिगिरी पूरा cells गुड़ा को थिबो आउ these are secreted by the action of follicular stimulating hormone जोड़ा को भी कहा जाउछ कोन FSH हला FSH ठीक अछि देन Sertoli cell रो फंक्शन हे गला अच्छा व्हाट इज द रोल ऑफ Leydig cells अबे Leydig cell कोन ना Leydig cell secrete testosterone which promote the spermatogenesis and the development of the male secondary sexual characteristics आउ जदी पॉइंट ऐड करबो कोन ना Leydig cells are released by the action of LH or luteinizing cells. LH or the luteinizing cells. Check out. These are also known as Leydig cells. Are also known as interstitial cells. Interstitial cells. Then here is question number 7. Next, what is implantation? Where does it occur? Implantation कौन कोडी होची implantation is the attachment and embedding of the blastocyst into the endometrium of the uterus है ना attachment of the blastocyst into the endometrium of the uterus एठो हमर आ गोटे क्वेश्चन मध्ये हे पारे कि what is blastocyst this is the stage of the zygote in which implantation occurs this is the stage of the zygote जोडा रे कि implantation होची आ ए जगह रे तमे blastocyst डायग्राम ता मध्ये करि परिबो एडा हला ब्लास्टोसिस्ट डायग्राम दा जोडी की एडा हला कोन ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जोटा की आगु जाके बनेबो कोन ना प्लासेंटा हला एडा हला कोन इनर सेल मास एडा माने कोन एम्ब्रियो बनेबो आगु जाके एम्ब्रियो बनेबो आ ये हेला हमर कोन ब्लास्टोसील है ना अब ए जो स्ट्रक्चर ता तमे देखि पारो छ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द blastocyst then ए गला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा रो फंक्शन कोन एबे प्लासेंटा मध्ये गुटे प्रकार हमर टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर temporary endocrine structure गुला काम करछि ना कोन होबो द प्लासेंटा facilitates the exchange of the oxygen nutrient and wastes between the mother and the fetus and also secretes hormones such as hCG progesterone estrogen and आ गोटे मध्ये हार्मोन करूछि सेटा हला कोन ना HPM हला त एडी जदी हमें आ गोटे हमरो 1 मार्क क्वेश्चन देखि परिबा कोन hCG कोन hCG हला ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कोन करूची ये हमर मेंटेन करूची maintains the corpus luteum which supports the pregnancy आउ ए हार्मोन डा को हमर सेति पई बोली इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी बोली मते कहै छै काहे कि ना वंस प्रेगनेंसी हला पारे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स रो ही हमर ये एचसीजी हार्मोन टा रिलीज होची सेति पई बोली एटा इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी बोली मते एटा को कहै छै देन तापरे एचपीएल भी आ गुडे हार्मोन डे अछि ताको कहै जाउची कोन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन ये मध्ये हमर ये कोन करची ये करची प्लासेंटा द्वारा रिलीज
ठीक अछि प्लासेंटा द्वारा रिलीज होछि नेक्स्ट क्वेश्चन आसो व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड व्हाई इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्क मेनार्क इज द फर्स्ट occurrence of the menstruation marking the beginning of the reproductive phase in the females ए जगह रे कोन होछि को जगह रे हमर देखा जाउछि प्राय तो प्यूबर्टी टाइम रे देखा जाउछि फीमेल्स मानक केस हला आ मेनोपॉज का को जाउछि stoppage of the menstrual cycle stoppage of the menstrual cycle then next what is colostrum mention its importance colostrum da kono colostrum is the mother's first milk mother कोटे प्रेग्नेंट हला पारे जते बेले से मिल्क प्रोड्यूस करबो से मिल्क ता होची तार कोलेस्ट्रॉम बोली कुआ जाउची जोटा की टिके हमर येलोइश कलर रो थाए येलोइश कलर रो फ्लूइड ता थाए व्हिच इज रिच इन एंटीबॉडीज colostrum is the first milk produced after the childbirth it is rich in antibody especially IgA एटा गोटे मार्क करबा IgA एंटीबॉडी रे रिच थाए और प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न पैसिव इम्यूनिटी माने कोन डायरेक्टली एंटीबॉडी ता डायरेक्टली छुआ को मिली गला हैला छुआ को किछि कष्ट करिया पड़लानी डायरेक्ट एंटीबॉडी ताको मिली गला ठीक तो आउ को एंटीबॉडी रे रिच अछि एटा IgA टाइप रो एंटीबॉडी रे एटा पूरा पूरी रिचली प्रेजेंट अछि colostrum is the mother's first milk next what is the significance of the zona pellucida zona pellucida कोन करछि ना zona pellucida protect the ovum and prevent the polyspermy by allowing only one sperm to fertilize the egg तो zona pellucida हमर कोन करछि ensure करछि माने बा प्रिवेंट करछि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करछि पॉलीस्पर्मी को हैला अच्छा ओवम रो ऊपर लेयर टा जोटा की हमरो जोना पेलुसिडा रे मेड अप जोना पेलुसिडा रे मेड अप इट इज मेड अप ग्लाइकोप्रोटीन्स हैला ग्लाइकोप्रोटीन्स काहेंगी ना जोना पेलुसिडा होची गोटे ए सेल्युलर लेयर बा नॉन सेल्युलर लेयर ता सेट ऑफ नथाय से तो कोथरे मेड अप था ग्लाइकोप्रोटीन्स रे मेड अप था किमिदी कोन करूची से हमर जोना पेलुसिडा रो थिकनिंग हे जिबा जको हमरा ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करछि सो दैट माने मल्टीपल स्पर्म अन्य गोटे स्पर्म फर्टिलाइज हला पारे अन्य स्पर्म जेम जैसे फर्टिलाइज न होई परंतु सेही जिंस को एंश्योर करछि ता द्वारा से कोन करछि ना जोना पेलुसिडा को ब्लॉक कर दोछि जोना पेलुसिडा रो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दोछि सो दैट अन्य स्पर्म आसे कि जेमिते फर्टिलाइज न कर पारे हैला तो एटार क्वेश्चन आंसर ए रहि गला नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन जोटा कि हम प्रीवियसली डिस्कस भी करि सारी थिले हैला HCG maintains the corpus luteum during the early pregnancy, ensuring the continued progesterone secretion. HCG कौन करछि मेंटेन करके रखिता होछि corpus luteum को so that corpus luteum continuously progesterone secrete करूथिबा आ हम प्रेगनेंसी ता मेंटेन ही रहि पार. Next, what is the role of progesterone during pregnancy? Progesterone कौन करछि ना progesterone हमर endometrium lining रो thickening करौछि endometrium lining रो thickening करौछि जा द्वारा कि इम्प्लांटेशन पाई बोली जागा प्रॉपर्ली हमर बा एंडोमेट्रियम लाइनिंग दा प्रॉपर्ली वास्कुलर हेगी प्रेजेंट रहउची एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच छुआटा बा हमर जो एम्ब्रियोटा कंप्लीटली एम्बेडेड हेगी यूटेराइन लेयर रे अटैच हेगी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पाई बोली से सर्वाइव करि पारिबो हैला सर्वाइव करि पारिबो ठीक अछि यस प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द यूटेराइन लाइनिंग supports the implantation and prevents the uterine contraction during the pregnancy प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी रे कमी गला बोली कहले कंट्रैक्शन हेबा आरंभ होई छिबो जोटा कि हमर डिलीवरी रो गोटे सिग्नल नेक्स्ट व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द amniotic fluid जोटा कि हमर amnion layer रे प्रेजेंट अछि आ amnion layer ता कोन एडा होछि गोटे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डा हला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डा amniotic fluid cushions the fetus against the mechanical shocks maintains a constant temperature and allows the pre-fetal movement गोटे प्रॉपर टेम्परेचर गोटे प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करिगिरी गोटे ग्रेडियंट क्रिएट करिगिरी से हमर कोन करूची ना हमर मेकानिकल शॉक रो प्रिवेंट करूची एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करिगे रखुची गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करूची नरिशमेंट दोची आ ता संगे मूवमेंट को मध्ये अलाउ करूची फ्रिक्शन को मध्ये से रिड्यूस करि थाउची हैला फ्रिक्शन को मध्ये से रिड्यूस करि थाउची हैला कोन कहबी कौन मैम कहंतु अरे कहबी कोन पचरले तो कहबी नेक्स्ट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम अबे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो क्वेश्चंस गुडा को करियो हैला रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो क्वेश्चंस गुडा करिवा देखो
reproductive health is a state of complete physical, mental, emotional and social well-being in all aspects of the reproduction. Objectives जो दीटा हमें objective कथा कहूचे सेटा हला कोन to promote safe and responsible reproductive practices to reduce maternal and infant mortality through the quality health care हैला through the quality health care एटा directly तमरो factual जिंसरा factual माने database जिंसरा जोटा कि तमरो एनसीईआरटी रे given अछि आ एटा ही तमरो directly क्वेश्चन रे जदी आसीबो ए टाइप रो ही तमे डायरेक्टली लिखि देबो एनसीईआरटी रो डायरेक्ट स्टेटमेंट गुडा कहबा हैला डायरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट what is contraception mention any two benefit of the contraceptive methods contraception is the deliberate prevention of the pregnancy by using various methods contraception use करबा द्वारा हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करि परिबा आ contraception गुटे एमितिया जिंसो जोटा कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हैला बा हमरो जो माने प्रेगनेंसी रे रिस्क रहउची से केस रे हमें contraception यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करि परिबा आ contraception हमर गुडाई प्रकार रही पारे से भीतर गुटे हला बैरियर सर्जिकल केमिकल हार्मोनल बहुत गुडाई प्रकार हमर नेचुरल मेथड रो contraception मध्ये रहउची जोटा कि हमर गोटे प्रकार contraception ठीक अछि हां जेनेटिक्स रा क्वेश्चन हो आ पर जेनेटिक्स रा क्वेश्चन करबा हैला ठीक अछि contraception is the deliberate prevention of the pregnancy by using various methods benefit hela prevent unwanted pregnancy helping family planning and the population control ठीक अछि next what are sexually transmitted infection or STIs name any four STIs or sexually transmitted infections are the infections transmitted mainly through the sexual contact रे जो diseases उडा हम spread हबो सेडा सब हम sexually transmitted infections रे जाउचंती जेमिति कि हला gonorrhea syphilis chlamydiasis और genital herpes हला एमिति त हमर तीन चारटा एग्जांपल जोडा कि तमरा बुक रे मध्ये मेंशनड अछि सेडा को तमे नेकरी थोई दबो हला तो तीन चारटा एग्जांपल को मने रखि थाओ आ एई जिंसटा मध्ये मने रखि थाओ जे gonorrhea और syphilis होची बैक्टीरियल chlamydiasis होची प्रोटोजोन genital herpes होची viral हला viral next why are STIs considered a major public health problem? Give any two reasons. They can cause infertility if left untreated. STIs, some STIs such as HIV infection can be life-threatening and spread rapidly. है ना? कहीं की STIs उड़ा का हमारे major public health concern ऊपर हमें दोचे public health problem ऊपर हमें इड़ा को focus करोचे कहीं की ना हमारो इड़ा life-threatening मध्य है पारे जो टारो की best example होची HIV है ना? आउ इमिति इड़ो आउ कोटे question मध्य है पारे what are the three STIs? Three STIs which are not curable हैला कोन गोटे हला HIV गोटे हला herpes आ गोटे हला hepatitis B ए तीनटा हमरो not curable हैला आर क्योर नहीं next what is amniocentesis why is it banned for routine use in the India amniocentesis होची गोटे हमरो diagnosis test ता fetal diagnosis test ता जोटा रे कि हमें fetus रो हमें amniotic fluid collect करे कि जा भीतर कि fetal रो cells गुडा को most probably थाई पारे से सब cells को collect करे कि हमें तार chromosomal disorders को देखि पाबो down syndrome हे गला turner syndrome हे गला klinefelter syndrome हे गला से सब syndromes गुडा हमें देखि पारुथिले ठीक अछि अच्छा the amniocentesis is a prenatal diagnostic technique in which amniotic fluid is analyzed to detect the fetal genetic abnormalities it is banned for the routine sex determination because it has been misused for female suicide एटा हमें amniocentesis रो प्रोसेस ता आनी थिले हमें chromosomal disorders को डिटेक्ट करिया पई बोली हमें जिंसो को केमिति प्रिवेंट करि परिबा या फिर हमें disorders रो चांसेस को देखि परिबा सेटा पई बोली आसीतिला बट एटा कोन हैला ग्रेजुअली धीरे धीरे एटा लीड करला सेक्स डिटरमिनेशन को पुओ जियो अछि कि नै सेटा जाना पड़ी गला ता ऊपर कोन हैला जियो देख माने फीमेल रो फेटिसाइड हबा आरंभ हो गला हैला फीमेल जदी अछि डिटेक्ट करले बोली कोन the women should go for abortion तो से पे बोली सेटा fetal ferticide को लीड करला से बोली ता ऊपर बैन लगी गला नेक्स्ट what is infertility mention any two causes of infertility माने the condition or the situation in a person जो डरे की सिम्पली और fertility show करनी माने the individual has lost the power to get pregnant or to conceive ठीक अछि सी आउ माने इंटरकोर्स हला परे मध्य अनयूजुअल बा सॉरी अनसेफ इंटरकोर्स हला परे मध्य जदी गोटे कपल प्रेग्नेंट हेई पारो नहांदी ताहले से माने भितरु किए गोटे इनफर्टाइल अछि infertility is the inability of a couple to conceive despite regular unprotected intercourse for an extended period एनसीईआरटी रे दिया हिची रेगुलर अनप्रोटेक्टेड 2 इयर्स भितरे
2 years जाए जदी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस पारे मध्ये जदी प्रेगनेंसी न हो देन द कपल इज सेड टू बी इंपोर्टेंट हला कॉज कोन लो स्पर्म काउंट और पोर स्पर्म मोटिलिटी ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और द हार्मोनल इंबैलेंस एटा मेल केस से हे पारे आ एटा हमर फीमेल केस से हे पारे ठीक अछि तो एटा मेल और फीमेल तीन जगह केस से हमर इंपोर्टेंसी बा हमर इनफर्टिलिटी देखा जाई पारिबो नेक्स्ट व्हाट इज आईवीएफ इटी expand the abbreviation and mention its use एडा खाली expand करिया पे कहिछि ठीक अछि IVFET stands for in vitro fertilization and embryo transfer it is an assisted reproductive technology जोटा को कि हमें ART बोली कहउछे ART बोली कहउछे used to help the infertile couple achieve the pregnancy जोटा कि हमर एग्जांपल रे हमें टेस्ट ट्यूब बेबी हे गला GIFT ZIFT not only हमर IVFET रो फुल फॉर्म दा पचारछि GIFT रो फुल फॉर्म पचारि परिबो ZIFT रो फुल फॉर्म पचारि परिबो AI रो फुल फॉर्म पचारि परिबो ET रो फुल फॉर्म पचारि परिबो ठीक अछि तो जत्ते के भी सब हमर शॉर्ट फॉर्म सोडा को दिया हिछि से एब्रिविएशन सोडा को सब माने रखिथिबो हैना एब्रिविएशन सोडा को सब माने रखिथिबो जोटा कि तमरो एडारे हेल्प करिवो नेक्स्ट distinguish between natural and barrier method of contraception any 2 points natural method of contraception barrier method of contraception दीटा पॉइंट रे हमको डिफरेंशिएट करिया अछि natural method do not use devices or drugs किछि devices रो यूज होनी and rely on avoiding the intercourse during the fertile period हैला एटा खाली हमर कोन करछे ना हमें डिले करबा प्रोसेस ता या फिर हमें प्रिवेंट करबा इंटरकोर्स को प्रिवेंट करबा ए ऊपर ही फोकस करछे हमर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाकी बैरियर मेथड कोन करछे यूज ऑफ द फिजिकल बैरियर सच एज condoms हैला condoms और diaphragms condoms होची कोन मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेल बैरियर मेथड diaphragms होची फीमेल बैरियर मेथड to prevent the sperm from reaching the ovum एटा रे हमें फिजिकल मीटिंग ऑफ द sperm and ovum को हमें अवॉइड करछे हैला sperm और ovum जेमिति फिजिकली मिसी न पारिबे से जिंस को हमें इंश्योर करछे तो ये हेगला आ गुडे पॉइंट नेक्स्ट mention any two functions of the National Reproductive and Child Healthcare Program RCH program हैला RCH program रो दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन थिला provide maternal and child healthcare services create awareness about the contraception reproductive health and prevention of the STIs जहा जहा सब रोग बैराग जहा जहा सब हमर स्टैंडर्ड मेथड्स उडा गथिला से सब ऊपर हमर फोकस करिग्री हमें केमिति रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऊपर काम करिके हम इंडिया को आगु को बढ़ाई परिबा से सब ऊपर कथा होतिला कि RCH program next why are condoms considered as the best contraceptive method give any two reason condom जोटा कि हमर कोटे मेल बैरियर मेथड रे हमर इंक्लूडेड होची मेल बैरियर मेथड रे इंक्लूडेड होची to prevent unwanted pregnancy first केमिति प्रिवेंट करछन unwanted pregnancy by avoiding the physical meeting of sperm and ovum they reduce the transmission of sexually transmitted infections including the HIV तामाने हमर HIV को मध्य बा हमर STDs को मध्य प्रिवेंट करि पाइबो ए प्रकार बैरियर मेथड ता जोटा कि हमर मेल रो बैरियर मेथड condoms नेक्स्ट एबे आसी जाऊ हमर MCQ सॉल्व करबो हैला 25 टा पाखा पाखी हमर थिला कोन क्वेश्चन आंसर 2 मार्क क्वेश्चन थिला ठीक अछि एबे आउ किछिटा क्वेश्चंस हमें MCQ रे सॉल्व कर देबा ठीक अछि जा द्वारा कि तमरो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ए तीटा क्वेश्चन तमरो एका संगे ही कवर हो छिको देखो the primary oocyte remains arrested in which stage until the puberty primary oocyte हमरो meiosis 1 स्टार्ट करूची किंतु arrested till at को स्टेज रे प्रोफेज 1 रो डिप्लोटीन स्टेज रे अरेस्ट ही होची केतले पुनी एडा रिज्यूम होची जते बेले हमरो कोन होची प्यूबर्टी हिट करची हैला प्यूबर्टी हिट करची तापर ये हमर रिज्यूम करिगिरी सेकेंडरी oocyte ऑफ पोलर बॉडी फॉर्म करची तो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 here will be the correct answer next the acrosomal enzyme are primarily responsible for acrosomal enzyme गुडा कोडी अछि acrosomal enzyme रे acrosome कोडी लोकेटेड अछि head of the sperm acrosome रे coenzyme अछि hydrolytic enzyme like sperm lysine hyaluronic acid acrosine एगुडा को सब हमर एडा रे प्रेजेंट अछि हैला तो एडा हमर acrosomal enzyme कोन करछि द sperm motility को नहीं egg activation नहीं formation of polar bodies नहीं ना penetration of the zona pellucida को penetrate करिगिरी जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करिगिरी हमर ये पहुंचिया रे हेल्प करछि हैला
ओवम सहित फर्टिलाइज करे हेल्प करछ which hormone is chiefly responsible for maintaining the corpus luteum during the early pregnancy time रे जते बेले माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर early pregnancy माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो ट्राइमेस्टर टाइम रे की हमर कॉर्पस ल्यूटियम रो सिक्रेशन ऊपर ही हमर पूरा प्रेगनेंसी डा कॉर्पस ल्यूटियम रो सिक्रेशन ऊपर ही पूरा प्रेगनेंसी रा डिपेंडेंट थाई हला तो कॉर्पस ल्यूटियम कोन करूची एडा गुडा हमर टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड था जे की प्रोजेस्टेरोन रिलीज करछ आ एडा को के मेंटेन करके रखछ एडा को हमर एचसीजी हार्मोन दा मेंटेन करके रखछ एचसीजी हार्मोन जोडा की होची कोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ना ठीक अछि मैम नोट्स कोन नोट्स आंसर करू ना खाली नोट दरकार हां क्लास करू ना आंसर करो आगो तापर नोट्स तो दिया होची न दिया होची की करो the ampullary stomach junction is the usual site for ampullary stomach junction is the usual site for कोन fertilization रे usual site ता बा कोडी हमर fertilization होची एडा होची हमर ampullary stomach junction नहले खाली ampulla बोली मरे हम लिखि परिबा ampulla of the oviduct or the fallopian tube है ना implantation टा कोडी होची endometrium of uterus रे endometrium रे एटा देखा जाउछ हैला क्लीवेज रे कंप्लीट होची क्लीवेज टा कोडी होची प्राय तो हमरो fallopian tube रे क्लीवेज होची यूटेरस को आसिला बडो हमरो क्लीवेज टा कंप्लीट ही जाउची कंप्लीट क्लीवेज तापरे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को आसिगरी इम्प्लांटेशन हो जाउछ हैला गैस्ट्रुलेशन कोन गैस्ट्रुलेशन होची फॉर्मेशन ऑफ germ layers ठीक अछि हां पीडीएफ तो देई ना दे क्लास सरीले तो दिया हबो क्लास सरीले दिया हबो ना नहीं आगुरु दिया हिचे तुमको पीडीएफ how which cells form the blood testis barrier blood और testis barrier हमरो के फॉर्म करूची which cell form the blood testis barrier it is the Sertoli cell blood testis barrier form करछोंदी जोडा कि हमरो नर्व सेल्स बोली मते कहआ जाउची या फिर सस्टेंटाक्युलर सेल्स बोली मते कहआ जाउची हैला नेक्स्ट the first menstrual cycle in the female is known as just अबे हमें 2 मार्क क्वेश्चन रे मते डिस्कशन करिले हैला first menstrual cycle is known as menarche और last menstrual cycle last हैला menopause the end of the menstrual cycle सेटा को हमर menopause बोली कहछ next which layer of the blastocyst develop into the embryo blastocyst को लेयर ता embryo को डेवलप करछ blastocyst को लेयर ता embryo को डेवलप करछ हमर ट्रोपोब्लास्ट सॉरी embryo पचरछि ना तो इनर सेल मास हबो हैला blastocyst रो हमर ट्रोपोब्लास्ट लेयर ता हैला एटा आउटर सेल लेयर ता नहीं ए टाइप रो रोज ना हैला ये हैला इनर सेल मास ये हैला ट्रोपोब्लास्ट आगु जाईगिरी हमर प्लासेंटा फॉर्म करूची और इनर सेल मास आगु जाईगिरी हमर को फॉर्म करूची एम्ब्रियो हैला ये हैला हमर ब्लास्टोसील एडा हैला ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर ता नेक्स्ट ऐसा which hormone induces the milk ejection after childbirth milk ejection के करूची ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन कोन करूची मिल्क रो प्रोडक्शन करूची
प्रोजेस्टेरोन कौन करूची इट supports the pregnancy by maintaining the endometrial lining को मेंटेन करिके हमर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करछ हैला और रिलैक्सिन दा कोन करूची रिलैक्सिन दा रिलैक्सेस आवर contraction ପରେ pubic muscles रो relaxation करूछ next capacitation of the sperm occurs in जोडा कि हम 2 मार्क क्वेश्चन जो डिस्कशन करथिले फर्स्ट क्वेश्चन ही कैपेसिटेशन ऊपर थिला कोडी होतला कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रे होतला को कहाटी होतला ना स्पर्म रे होतला स्पर्म रे गोटे सीरीज ऑफ physiological changes physiological changes देखा जाउची जोटा की हमरा कोन करची increases the sperm motility and its fertilizing capacity. Then next question number 10. During which phase of the menstrual cycle does ovulation generally occurs? Amara को phase अछि menstrual cycle रो चारटा phase कोन कोन 28 डे रो menstrual cycle बोली कहले 14th डे रे होची ovulation तो 14th डे रे ovulation होची बोली कहले एडा को हमर ovulatory phase बोली कहै गला हैला 15 रो नेगिरी 28 डे जाय एडा को जाउची कोन ना luteal phase या फिर secretory phase ठीक 1 रो नेगिरी 5th डे जाय एडा को गला कोन एडा को हला menstrual phase बा bleeding phase हैला आ ए जो डेटा रहिला 6 to नेगी 13 जाय एडा हला follicular और proliferative phase डन ठीक अछि एडी पचारला कि ओव्युलेशन कोडी होची केते बेले होची हमर मेंस्ट्रुअल एडा हो जे हमर does generally occur which phase of the menstrual cycle does ovulation generally occur follicular phase luteal phase एडा रे ऑप्शन नाही रे तो ऑप्शन नहीं नहीं हो एडा को काटी दियो luteal phase और secretory phase एकका हला ना एडा को काटी दियो एडा को काटी के एडी लिखि दियो ovulatory phase एडा इज करेक्ट आंसर ठीक अछि ऑप्शन रे ही नथिला क्वेश्चन ठीक अछि ग्रेस एमिति क्वेश्चन आसे गले तो ग्रेस मार्क ना नेक्स्ट which assisted reproductive technique involves the direct injection of the sperm into the ovum माने ovum अछि sperm directly ए भीतर को एंटर करि गला एडा कोन को जाउची ICSI रो फुल फॉर्म कोन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक sperm injection intracytoplasmic sperm injection next which of the following is a barrier contraceptive method barrier method हमर दी प्रकार हे पारे मेल्स मानकर में barrier method भी हे पारे और फीमेल मानकर barrier method भी हे पारे barrier method रे कोन होची avoids the physical meeting of sperm and ovum sperm और ovum रो physical meeting को avoid करना जोडरे कि मेल्स रे हमर condoms और फीमेल्स रे हमर डायफ्राग्राम्स वॉल्स और सर्विक्स हैला और condoms रे हमर फर्स्ट जोडा ब्रांड ता हमर रिलीज हेतिला ताको कहला कोन निरोध ठीक अछि तो हमर कोडा बैरियर मेथड condoms डन ठीक अछि नमस्कार नेक्स्ट which hormone is secreted by the Leydig cell रो हमारा androgen release होची और androgen in case of male is testosterone
स्टेज टू स्टेज ठीक नेक्स्ट which sexually transmitted infection is caused by treponema pallidum treponema pallidum द्वारा कौन कॉज होची एटा कॉज ट्रेपोनेमा पैलिडम ता कोन एटा गोटे बैक्टीरिया डा जो बैक्टीरिया डा की गोटे एसटीडी कॉज करूची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करूची सी हला कोन सिफिलिस नेक्स्ट द एम्ब्रियो जनरली एंटर्स द यूटेरस एट व्हिच स्टेज वो स्टेज रे जनरली एम्ब्रियोटा माने हां एम्ब्रियोटा यूटेरस को हमर एंटर करूची एम्ब्रियो जनरली एंटर्स द यूटेरस एट व्हिच स्टेज टू सेल स्टेज तो नहीं गैस्ट्रुला स्टेज तो इम्प्लांटेशन पर ब्लास्टुला तो हमर ये स्टेज मोरुला स्टेज रे जनरली से एंटर करे मोरुला जोड़ा कि हमर 8 to 16 सेट स्टेज ठीक अछि कोन हला 11 नंबर कोन हला व्हिच असिस्टेड ART मेथड रे पचाला कि को टेक्निक टाइप भीतर को टेक्निक रे हमें डायरेक्टली स्पर्म को नेगी ओवम रे एंटर कर दोछ डायरेक्टली स्पर्म को नेगिरी स्पर्म को नेले ओवम रे डायरेक्टली नेगिरी हमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम सहित इंजेक्ट कर दोचे सेडा हला हमर ICSI टेक्निक टा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट which hormone primarily stimulates the milk production या ऊपर मध्ये हम प्रीवियसली डिस्कशन करि सारथिले हला प्रीवियसली डिस्कशन हे जाइथिला आंसर विल बी प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन टाइम बोली रिस्पांसिबल HCG कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करिया रे हेल्पफुल आउ LH ता होची हमर ल्यूटिराइजिंग हार्मोन copper ion released from the copper T mainly increases the sperm motility enhance the ovulation reduces the sperm fertilizing capacity stimulate the implantation copper T कोन copper T होची गोटे प्रकार रा हमर केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से भीतर ए जो कॉपर आयन उडा अछि कॉपर आयन कोन करूची induces the phagocytosis of sperm रो phagocytosis को बढ़े दोची तो sperm रो fertilizing capacity कमी जाउची हला fertilizing capacity कमी जाउची fertilization ही पाउनी which structure provides nourishment to the developing sperm cells it is obviously Sertoli cells जोटा को कि हमरो nerve cells बस sustentacular cells बोली मध्ये कहा जाए को हार्मोन रिएक्शन द्वारा ये रिलीज होची इट इज फ्रॉम द एक्शन ऑफ द LH को सॉरी FSH हला इट इज फ्रॉम द एक्शन ऑफ द FSH नेक्स्ट कोलोस्ट्रम इज पर्टिकुलरली रिच इन कोलोस्ट्रम दा कोन कोलोस्ट्रम दा होची हमर मदर्स फर्स्ट मिल्क जोटा कि हमर इम्यूनोग्लोबुलिन्स रे रिच थाय एंटीबॉडीज रे रिच थाय को एंटीबॉडी रे रिच थाय IgA एंटीबॉडी रे रिच नेक्स्ट which prenatal diagnostic technique involves the analysis of the amniotic fluid जोड़ा को कि हमरे amniocentesis बोली कहआ जाउची amniotic fluid को करेक्ट करके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हमें डिटेक्ट करिया पई बोली टेक्निक ता यूज करथिले बट इट वाज मिसयूज्ड एज फीमेल फर्टिसाइड की मिसयूज करा हला सेति में बोली ता बोली स्टैट्यूटरी बैन लगी हला नेक्स्ट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जोना पेलोसिडा इज टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी और जोना पेलोसिडा कोन एटा होची आउटर लेयर ऑफ द ओवम जोटा कि हमर ए सेल्युलर लेयर टा मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स रे एटा हमर मेड अप ऑफ थाए नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस तीन प्रकार नेचुरल मेथड अछि हमर कॉन्ट्रासेप्शन रो गोटे हला लैक्टेशनल एमिनोरिया lactational amenorrhea आ गोटे हला periodic abstinence आ गोटे हला withdrawal जोड़ा को कि हमर coitus interruptus बोली मध्ये कहै छै ये हे गेला हमर one of the natural methods human placenta is classified as human placenta हमर को प्रकार placenta रे को क्लासिफाई करा जाउची कि हमरो प्लासेंटा गुडाई प्रकार थाए हला गुडाई प्रकार प्लासेंटा थाए से भीतर डिफ्यूज प्लासेंटा कोटिलेडोनरी प्लासेंटा डिस्कॉइडल हेमोकोरियल प्लासेंटा ना हमरो जोनारी प्लासेंटा तो ह्यूमन प्लासेंटा होची हमरो डिस्कॉइडल हेमोकोरियल प्लासेंटा नेक्स्ट
Ovulation is triggered by the sudden surge of LH, जोटा कि को दिन होची 14th day of the menstrual cycle रे हमर देखा जाउची LH रो लेवल बढ़ुची, जोटा कि हमर एस्ट्रोजन रो लेवल को बढ़े गिरी ओव्यूलेशन को करूची. Next, which contraceptive method also provide protection against the most sexually transmitted infections? Sexually transmitted infection by STD को prevent हमर करूची जो method ता सी हला condom, which is the male contraceptive barrier method. Male the barrier method. Next, during cleavage, the overall size of the developing embryo, during cleavage, the overall size of the developing embryo रो size रे कोन देखा जाउची, आ हमर सेल रो नंबर रे कोन देखा जाउची, सेल रो size रे कोन देखा जाउची, कोन देखा जाउची. एम्ब्रियो रो साइज रे किछि चेंज होनी, किंतु एडी कोन होची, सेल रो नंबर इंक्रीज होला बेले को सेल रो साइज डिक्रीज हो जाउची, सेल रो साइज डिक्रीज हो जाउची. डन. नेक्स्ट, which hormone prepare the endometrium for implantation after the ovulation? It is progesterone. Progesterone हमरो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करूची, प्रेगनेंसी को केमिति सपोर्ट करूची, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करूची. नेक्स्ट, which of the following is the permanent contraceptive method in the male? Permanent contraceptive method male case रे ताको कहला vasectomy, और permanent contraceptive method in the case of female is known as tubectomy. है ना, it is known as tubectomy. Next, which of the following is not an assisted reproductive technology? कोडा टेक्नोलॉजी नुहे एडा हला एमटीपी. एमटीपी रो माने कोन हला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जोटा कि हमरो लीगलाइज केबे हेतिला इंडिया रे, लीगलाइज्ड इन 1971 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, which hormone is primarily responsible for initiating the uterine contraction during the parturition? It is oxytocin. Oxytocin को हमरो लव हार्मोन बोली मध्ये कुआ जाउची, हला काहेंगे ना ये हमरो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करूची ड्यूरिंग पार्चुरेशन. सेति में बोली एटा को बर्थ हार्मोन बोली कुआ गला, बर्थ हार्मोन बोली कुआ गला. ता संगे रे हमरो मिल्क रो इंजेक्शन को मध्ये से इंड्यूस करूची, सेति में बोली एटा को हमरो लव हार्मोन बोली कुआ गला. आ जदी देखबा ये कोड रिलीज होची, एटा रिलीज होची पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रो, जोडा को कि हमरो न्यूरो हाइपोफाइसिस बोली कुआ जाउची, है ना. So with this, thank you so much everyone. जो माने मते इंटरेस्टेड अछंदी चैंपियन बैच रे जॉइन हेगिरी एमिति ही प्रिपरेशन करिवा पई बोली, आ एमिति ही क्वेश्चंस रे प्रैक्टिस करिवा पई बोली, ताले आ देरी न करिगी तळे दिया जाइथिबो जो नंबर ता सेइडा रे कांटेक्ट करिगी एबे ही एनरोल हे जानतो. बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड रे अवेलेबल अछि क्लासेस, तो सेति पई बोली निजर बोर्ड एग्जाम रे प्रिपरेशन को बूस्ट करंतु. ठीक अछि. आ आज रो क्लास केमिति लागिला कोन लागिला मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाइबे, आ ए क्लास रो पीडीएफ तो मानकु WhatsApp ग्रुप रे शेयर कर. थैंक यू सो मच एवरीवन. जय जगन्नाथ.